Hello, civil service aspirants. I welcome you to this YouTube live program, YouTube live class organized on behalf of StudyIQ. In today's class, I will be discussing about Professor R.K. Merton and his contribution to sociology. At the outset, I would like to tell you the fact that R.K. Merton, a professor of Harvard University of America, is having a unique, a distinct, a separate position in sociology, particularly in context of the sociology of structural functionalism. R.K. Merton is such a giant and gigantic figure in sociology that he brought a paradigm shift in sociological analysis related to structuralism. R.K. Merton was such an outstanding sociologist who contributed for making structural functionalism a value free approach. पिलामाने R.K. Merton का विषय कहिया पई जाईकी मो कहिया पई चाहूची जे R.K. Merton होचंती एमिति जने सोशियोलॉजिस्ट जी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की न्यूट्रल पाथ रे नहीं गले केमिति पिला माने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कौन आगे मु कहि दउची स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गोटे कंजर्वेटिव अप्रोच सोशियोलॉजी रे जोटा कौन करे सब बेले स्टेबिलिटी कथा कहे एवं बिग स्केल बा लार्ज स्केल सोशल चेंज को अपोज करे किंतु R.K. Merton कर सबुठारु बड़ कंट्रीब्यूशन होची R.K. Merton स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो प्रायोरिटी दौला सोशल स्टेबिलिटी उपरे ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रो थिला R.K. Merton किछि काम कले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे जहा फल रे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रो कंजर्वेटिव अप्रोच ग्रेजुअली हटी गला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रो सेथि पई से कोन कले मु कहूची. First of all, I want to tell you the fact that Professor R.K. Merton introduced certain concepts in sociology. He introduced concepts like function, dysfunction, non-function, manifest function, latent function in sociology. Function कहले आमे कौन बुझंती function अर्थ positive contribution. The positive contribution of an element is called function. Function means the positive contribution of an element. पिला माने R.K. Merton कर सोशियोलॉजी प्रति कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी ताकू बुझिया पई हेले R.K. Merton कर पांचटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट उपरे तुमको प्रायोरिटी दबा पई पड़िबो अर्थात से पांचटा कॉन्सेप्ट तुमको बुझिया पई पड़िबो. कौन से पांचटा कॉन्सेप्ट ना फर्स्ट होची फंक्शन, सेकंड होची डिसफंक्शन, थर्ड होची नॉन फंक्शन, फोर्थ होची मैनिफेस्ट बा लैटेंट फंक्शन. मैनिफेस्ट फंक्शन फर्स्ट होची फोर्थ होची मैनिफेस्ट फंक्शन, फोर्थ फिफ्थ होची लैटेंट फंक्शन. कौन से पांचटा कॉन्सेप्ट मु कहि दउची. फर्स्ट हला फंक्शन. फंक्शन मीन्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट. गोटे एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को फंक्शन कहा जाए. फॉर एग्जांपल मु कहूची जे गोटे यूनिवर्सिटी गोटे जगह रे एस्टाब्लिश्ड हैला. गोटे जगह रे यूनिवर्सिटी नथिला, यूनिवर्सिटी टी तैयारी हैला. यूनिवर्सिटी तैयारी हवा फल रे कोन हैला ना से एरिया रो पिला माने यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़िले, तांकर हायर एजुकेशनल अटेनमेंट आसिला. दैट इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी. सो फंक्शन मीन्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. सेकंड कांसेप्ट होची डिसफंक्शन. डिस अर्थ नेगेटिव, डिसफंक्शन अर्थ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन. सो द नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड डिसफंक्शन. नॉन फंक्शन मीन्स neither positive nor negative. Non-function means dysfunction means negative contribution. Negative contribution is called dysfunction.
Non-function means neither positive nor negative contribution. Neither positive nor negative. प्रथमे ये तीनटा कॉन्सेप्ट मु बुझे दउची तापरे आउ दीटा कॉन्सेप्ट जो रहिला मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन से सेठी की जीबी कौन होची फंक्शन मु कहिली यूनिवर्सिटी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हला यूनिवर्सिटी हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन गेटिंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन it also provides the student research facilities. So positive contribution, that is function of a university, is to provide higher educational degree and research facilities to the students. That is the function of a university. Dysfunction अर्थ negative contribution. Negative contribution कौन गोटे यूनिवर्सिटी केमिति नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करिबो बा कोनोसी गोटे जिनसर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी रही परिबो खाली यूनिवर्सिटी में समस्त नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रही परिबो देख कौन होची टेक फॉर एग्जांपल इट हैज नॉट रेन्ड इन आवर सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहु समय धरी आम सोसाइटी रे वर्षा होई नाही इट स्टार्टेड रेनिंग धर बहुत दिन हलानी वर्षा हैनी हठात वर्षा हवा आरंभ कला ऑब्वियसली द एग्रीकल्चरिस्ट वर वेटिंग फॉर रेन एंड व्हाइल इट स्टार्टेड रेनिंग ऑब्वियसली इट हेल्प द एग्रीकल्चरिस्ट इन द मैटर ऑफ डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सो रेन is having positive contribution from the point of view of the agriculturist who are waiting or who were waiting for rain for a long period of time. पिला माने मते सुनी पारुचो ना नाही सुनी पारुचो कि नाही टिके रेस्पोंड कर दियो से अंजे मु आगेबी गुड मॉर्निंग डस्की ब्यूटी मते सुनी पारुछ पिला माने आई होप दैट यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपर्ली यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम ओके किछि रेस्पॉन्स नाही ओके तेनो जेहेतु वर्षा है नथला हठात वर्षा हला फार्मर कर पॉइंट ऑफ व्यू रो जो माने वर्षा को बहुत दिन धरी बहुत समय धरी अपेक्षा करिथिले आज इट स्टार्टेड रेनिंग ऑब्वियसली फार्मर्स आफ्टर रेन स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सो thus from farmers point of view rain is having positive contribution ओके तापरे आसुची डिसफंक्शन अर्थ होची डिस अर्थ नेगेटिव function अर्थ contribution. So the negative contribution of an element is called dysfunction. कौन negative contribution? देखो you had gone in a picnic party and it all of a sudden it started raining and your picnic party was spoiled. पिला माने suppose जेतेबेले वर्षा हैला सेतेबेले तमे पिकनिक रे जाइथिलो तमर रंधा सरी जाइछि बढ़ा बढ़ी करूच खाइया पाई गछ मूल रे गोटे जंगल रे हठात वर्षा हवा आरंभ कला तेनु तमर पॉइंट ऑफ व्यू रो दिस रेन ऑल ऑफ ए सडन स्टार्टेड spoiling your picnic party was wasted. So from your point of view rain is having negative contribution or dysfunction बुझी होची. So while from farmers point of view rain is having positive contribution but from your point of view rain is having negative contribution, that is dysfunction. बुझेला. थर्ड टा होची non-function. Non-function means neither positive nor negative contribution, that is called non-function. Suppose it started raining at that point of time
an industrialist or an IS officer was sitting in his air conditioned office, and obviously rain is having neither positive contribution nor negative contribution from his point of view, कारण इंडस्ट्रियलिस्ट तार तो से एयर कंडीशन चैम्बर रे बसी कि आईएएस ऑफिसर टे बसचंती एयर कंडीशन चैम्बर रे, तेणु वर्षा तांको पॉजिटिव वे रे कंट्रीब्यूट करूनी कि नेगेटिव वे रे कंट्रीब्यूट करू नाही. सो फ्रॉम आईएएस ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम industrialists point of view, rain is having neither positive contribution nor negative contribution. In this way, rain is having non-functional consequences from the point of view of the industrialist or the IS officer. तेणु बुझीगल फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन तीनटाक जिनस बुझीगल. तापरे आउ दीटा कॉन्सेप्ट आर के मर्टन कॉइन कले, से दीटा कॉन्सेप्ट को मु जीबी. से दीटा कॉन्सेप्ट होची तमरो मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लैटेंट फंक्शन. पिला माने मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन कहिले हमें कौन बुझंती. फंक्शन गला, डिसफंक्शन गला, नॉन फंक्शन तो बुझेई देली, लिखि देछि तार अर्थ होची या. तापरे आस मैनिफेस्ट फंक्शन. व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन? Manifest means the intended recognized positive contribution of an element. The intended recognized positive contribution of an element is called manifest function. Intended recognized positive contribution of an element is called manifest function. कौन मैनिफेस्ट फंक्शन? टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटी. देयर वाज नो यूनिवर्सिटी इन ए डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा और इन ए लोकालिटी इन आवर कंट्री, एंड नाउ गवर्नमेंट टुक द डिसीजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए यूनिवर्सिटी. Obviously, students of that district, students of that locality got the opportunity of getting higher education in the university. So from their point of view, university is having manifest function. जो पिला माने तांको एरिया रे यूनिवर्सिटी नथिला बोली कि से माने दूर को जाउथले पढ़िया पई, बर्तमान तांको एरिया रे यूनिवर्सिटी हे गला. तेनु सेही पिलांकर पॉइंट ऑफ व्यू रो कोन यूनिवर्सिटी रो मैनिफेस्ट फंक्शन अछि एवं गवर्नमेंट ही सेया प्लानिंग करी कि करिथिला जे एई एरिया रे एई डिस्ट्रिक्ट रे यूनिवर्सिटी टे नाही, एठी जदि यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश्ड हबो एई एरिया रो पिला पाठ पढ़िया पई सुजोग पाइबे, हायर एजुकेशनल डिग्री पाइबे एवं तांकर रिसर्च करिवार स्कोप बढ़िबो. सो आई वांटेड टू टेल यू द फैक्ट दैट manifest function is the deliberate, intended, recognized positive contribution of an element. यूनिवर्सिटी टाकू जदि आम एलिमेंट धरिबा, मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू प्रोवाइड हायर एजुकेशनल डिग्री as well as research facility to the students. Okay, that is manifest function. Second होची latent function. Second होची latent function. latent function कहिले कौन आमे बुझंती पिला माने latent रो literal meaning हैला hidden. latent रो literal meaning हैला hidden. latent function अर्थ the unintended, unrecognized, undeliberate positive contribution of an element. पिला माने जदि किछि तमरो बुझिबारे प्रॉब्लम होची बा किछि डाउट अछि ए टॉपिक रिलेटेड तमे मते मेसेज करि परिबो, तमे मेसेज देखि कि मु रिप्लाई कर देबी. ओके, सो कोन latent function, latent रो अर्थ होची hidden. latent रो latent function no definition mu dauchi the unintended, unrecognized, undeliberate positive contribution of an element is called latent function. Pila mane, you know the fact that some students while they were studying in university they also got their loving partner
and finally they took the decision to marry each other. तेणु यूनिवर्सिटी भितर किछि पिलांकु लाइफ पार्टनर मिले किंतु यूनिवर्सिटी कौन एस्टाब्लिश्ड होइथिला कि पिला माननको तांकर किछि पिलांकु तांकर लाइफ पार्टनर जोगेया पई यूनिवर्सिटी कौन एई ऑब्जेक्टिव धरि कि तयारी हेतला हे नथला. So some students get their marital partner from the university, but with this intention university was not established. So this is the latent function of a university. बुझे होची जे जो उद्देश्य रखिकी न रखिकी यूनिवर्सिटी तैयारी होता है किंतु किछि पिलांकर उद्देश्य साधित हुए जदियो यूनिवर्सिटी तैयारी होबा पछरे एई उद्देश्य नथिला. That is the latent function. Apart from that, I want to tell you the fact. You know, future leaders of the state, political leaders of the state, future political leaders of the country, they also come out of the universities. University campus ru देशर बा राज्यर राजनैतिक नेतांक भितरु किछि जनकर आविर्भाव हुए यूनिवर्सिटी कैंपस भितरु किंतु कोन यूनिवर्सिटी तैयारी हिथिला ए ऑब्जेक्टिव धरिकी ए ऑब्जेक्टिव धरिकी तैयारी हे नथला. तेणु जो ऑब्जेक्टिव टाको धरिकी तैयारी हेई नाही यूनिवर्सिटी सेटा होची तार latent function. So latent अर्थ hidden. So latent function of the university is to provide life partner to the students as well as to provide future political leaders of the state or of the country. In this way, I want to tell you the fact that latent function is the unintended, undeliberate, unrecognized positive contribution of an object or of in this case the university. Okay. तेणु latent function बुझीगल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर के मर्टन कॉइन करचंती तार ना होची सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी आईएएस परीक्षा रे एक क्वेश्चन टी पड़ीची सेथि मु ए शब्द टी जोड़ीची. सेरेंडिपिटी रो अर्थ होची the unanticipated consequences of an element or of an invention or discovery. The unanticipated consequences of an invention or discovery. जो आविष्कार होची बा जो उद्भावन होची तार जोटा कल्पना करा हे नथला जोटा प्लानिंग करा हे नथला से जिनसटा को आसीबाटा को कहा जाय सेरेंडिपिटी. अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस माने सेटा पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव भी हे पारे. पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हे पारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हे पारे. फॉर एग्जांपल पिला माने देखो, you know the fact that Columbus discovered America. Columbus discovered America. While Columbus discovered America, right now the liberal minded people belonging to Protestant Christianity of Europe started migrating to America. Columbus तांकर अमेरिका डिस्कवर कले. Columbus जेतले अमेरिका डिस्कवर कले तमे जानिच सेटा होची 1492 मसीहा. द ईयर इज 1492 AD. Columbus discovered America. And as soon as America was discovered by Columbus, the liberal minded people of Europe belonging to Protestant group, they migrated to America, got settled there. You know, Protestant people are very liberal minded people having logical, rational, scientific bent of mind. As soon as they got migrated to America and got settled there, obviously it eventually contributed for growth of American society, and obviously in 20th century world America became the most advanced country of the world. 19th century पर्यंत ब्रिटेन रो हेजिमोनी इन्फ्लुएंस सारा पृथ्वी रे थिला किंतु 20th सेंचुरी रे ब्रिटेन रो इन्फ्लुएंस आउ रहिलानी. अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है कि बाहरिला. कोलंबस कौन डिस्कवर करिथिले अमेरिका को यही लक्ष्य रखिकी नुहे. दैट इज अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिस्कवरी मेड बाय कोलंबस विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका. आर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी आर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी.
अमेरिका पृथ्वीर सबुठारु प्रभावशाली राष्ट्र हवा पछरे पॉजिटिव अच्छी ना नहीं नेगेटिव अच्छी ना नहीं आज तुम जो युद्ध चलती इराक उपर अटैक इराक इज्राएल युद्ध होची अमेरिका किए जाकि ईरान को अटैक करुची सारा पृथ्वी रे युद्ध आ शांति रे अमेरिकार मेजर रोल रोचे ना नहीं तेणु पॉजिटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी तेणु सेटा होची सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी रो लिटरल मीनिंग मु कहूची द अनएंटिसिपेटेड consequences of an invention consequences of a discovery is called serendipity. It may be positive consequence it may be negative consequences कोनोसी जिनसर पॉजिटिव और नेगेटिव दीटा को आमे कहि परिबा सेरेंडिपिटी पॉजिटिव नेगेटिव दीटा फॉर एग्जांपल कोविड-19 कथा आमे चिंता करिया कोविड-19 कथा आमे चिंता करिया देख कोविड-19 किए प्लान करथिला अनप्लान्ड वे रे सारा पृथ्वी के आसिला एज ए ग्लोबल पैंडेमिक एज ए ग्लोबल एंडेमिक सारा पृथ्वी के आसिला तार पॉजिटिव अच्छी तार नेगेटिव अच्छी हाँ ना नहीं नेगेटिव तो समस्ते जानच लोक माने मरले पैनिक फीलिंग आसिला लॉकडाउन हैला लाइफ केम टू ए हॉल्ट मेनी पीपल डाइड हैवोक वाज क्रिएटेड घर द्वार ताटी कबाट सब बंद पड़गला 2020 मसीहा बेलू फिलिंग तुम भीतर को आसलानी कोरोनार इनिशियल फिलिंग तुमको लगिलानी जे कोरोना एमितिया गोटे मारात्मक रोग जो रास्ता घाट रे लोक गले सटडाउन हो गला तुमको लगिला मु जदि मोर घर कबाट फिटेकी दांडू को जाए बाहर को जाए ग्रिल खोलिकी बाहर को जाए सत्य अबा जमी कोरोना बोलिकी गोटे किए बसी मत टेकिकी नहीं पलैब ए पैनिक फीलिंग आसिला बिजनेस रे लॉस हला इकोनॉमिक ग्रोथ ता अफेक्टेड हला जीडीपी ग्रोथ रेट सारा पृथ्वी रे एडवर्सली अफेक्टेड हला ओके दीज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोरोना पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरोना कौन कोरोना रो बहुत पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस अछि आज मु तुमको जो मीडियम रे पाठ पढ़ौछि ऑनलाइन रो मीडियम यूट्यूब मीडियम रे पढ़ौछि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो ट्रेमेंडस ग्रोथ कोरोना पीरियड रे हैला आज तमे घरे बसिकी सबू टीचर मानकर क्लास करि पारुछ दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना ऑनलाइन एडटेक कंपनी started flourishing during the corona period एटा होची पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस तेनु कोरोना रो पॉजिटिव और नेगेटिव दीटा को हमें कहवा सेरेंडिपिटी अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी समस्ते बुझिकल सेटा को इन्वेंट करा हो सेटा को डिस्कवरी करा हो बा सेटा स्वतः प्रवृत्त भाव आसू तार पॉजिटिव और नेगेटिव दीटा साइड की आम जदि चिंता करिबा दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी ओके तेनो एमतिया आर के मर्टन कौन कले फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन मैनिफेस्ट फंक्शन लैटेंट फंक्शन ता संगे सेरेंडिपिटी 6टा कांसेप्ट मु तुमको आर के मर्टन रिलेटेड बुझे देली वर्तमान आमे जिबा आर के मर्टन कर कौन कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म प्रति पिला माने टेबुल करिकी याकु शॉर्टकट मैनर रे मु लिखि देइछि ए सब कांसेप्ट रो अर्थ को मु टेबुल करिकी लिखि देइछि देखो कांसेप्ट मीनिंग एग्जांपल फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन मैनिफेस्ट फंक्शन लैटेंट फंक्शन सेरेंडिपिटी फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन बुझे देछि ताको देई देबी से तमर टेलीग्राम ग्रुप रे पोस्टिंग कर देबी गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट स्टडी आईक्यू तरफ मु करिया पे चाहूची जे स्टडी आईक्यू रे मु सोशियोलॉजी बैच सहित एथिक्स बैच आरंभ कर देछि स्टडी आईक्यू रे तमर आईएएस और ओएस रो सिलेबस जो रिटिन सिलेबस अच्छी जार वेटेज होची 1750 मार्क 1750 मार्क रु 1100 मार्क रो पाठ मु पढ़ौची फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ऑप्शनल 500 मार्क इंग्लिश एसे 250 मार्क
एथिक्स 250 मार्क एमती है 1000 मार्क अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज 100 मार्क रो क्वेश्चन आसी एमती 1100 मार्क रो पाठ मु पढ़ाऊँ तमें जदि मो गाइडेंस रे स्टडी आईक्यू रे पढ़िया पई चाहुच ताहले स्टडी आईक्यू को तमें कनेक्ट करि परिबो से जो नंबर मु कहिछि 7640003000 ए नंबर रे तमें कनेक्ट हे परिबो। ओके बर्तमान आस मोर टेलीग्राम ग्रुप तुमको मु कहिछि आगुरु ऑलरेडी जे मोर टेलीग्राम ग्रुप होछि थिंक सिविल सर्विसेज थिंक सरोज सामल सर से ग्रुप रे मु जहा लेटेस्ट मटेरियल सब पोस्टिंग करूछि इन्फॉर्मेशन सब दोछि। ओके तुम जदि मो गाइडेंस रे स्टडी आईक्यू रे पढ़िया पे चाहुछ ताल से जो नंबर कहली 7640003000 से नंबर रे कनेक्टेड हे जिवो। ओके राइट नाउ कम टू मर्टन्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की आर के मर्टन केमिति मॉडिफाई कले पिला माने फास्ट तमे जानिबा दरकार स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कोन तापरे तार मॉडिफिकेशन तमे जानिबो। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कौन तथरे वर्ड अच्छी फास्ट अच्छी स्ट्रक्चर सेकंड अच्छी फंक्शन। स्ट्रक्चर अर्थ होची कलेक्टिविटी ऑफ पीपल। ए कलेक्टिविटी ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ए कलेक्टिविटी ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। देख सोसाइटी रे विभिन्न लोक अच्छा आम सबू लोक को जदि मिसई दबा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। बा गोटे क्लासरूम रे 200 पिला बसी जने टीचर पढ़ाउछंती ए 200 पिला ता संगे टीचर को मिसई दबा दैट इज स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपैरेटिवली स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ ए सिस्टम और ऑफ ए सोसाइटी। स्ट्रक्चर रेफर्स टू the comparatively static stable aspect of a society or of a system that is called structure. Function कौन है? Function refers to the processual aspect. Function refers to the ongoing activity. जहा काम होची गोटे सिस्टम भितर ताकू आमे कहवा फंक्शन। क्लासरूम रे जदि फिजिकल क्लासरूम कथा आमे कहिबा जोटी 200 पिला बसचंती जने टीचर पढ़ौची ए 200 पिला प्लस टीचर को मिसई दबा दैट इज स्ट्रक्चर। फंक्शन होची देख स्ट्रक्चर टा कंपैरेटिवली स्टैटिक 200 पिला काली हे तो से पिला रो दीटा पिला न आसी पारंती दीटा नुआ पिला तीनटा नुआ पिला आसी पारंती कंपैरेटिवली स्टैटिक। टीचर तो से टीचर काली ही आसीबे तेणु स्ट्रक्चर कहले कंपैरेटिवली स्टैटिक स्टेबल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ और ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। फंक्शन कहले आमे कोन बुझंती ऑनगोइंग एक्टिविटीज क्लासरूम रे कोन होची क्लासरूम रे टीचर टी पढ़ौची पिला माने सुनुचंती पिला मानकर डाउट आसले से माने टीचर को पचारुचंती टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट इन क्लैरिफाइंग देयर डाउट। ए गुडा सब ऑनगोइंग एक्टिविटीज दैट इज द फंक्शन। लिसनिंग टू टीचर asking question to the teacher clarifying the doubt, all these things are called function. तेणु गोटे सोसाइटी रे कंपैरेटिवली स्टैटिक स्टेबल एलिमेंट को मिसई देले स्ट्रक्चर ता भितरे जहा ऑनगोइंग प्रोसेसुअल एक्टिविटीज होची दैट इज फंक्शन। सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहिले मु तुमको आगुरु कहिची दरखेम को पाखरु आरंभ करिकी टालकट पार्सन्स पर्यंत। दरखेम जन थिले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, किंग्सले डाभिस, बिलबर्टी मूर, टालकट पार्सन्स एमान सब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। एमाने समस्ते कहउचंती सोसाइटी रो गोटे स्ट्रक्चर अछि, सोसाइटी रे लोक माने अछंती सेमान को मिसई देले स्ट्रक्चर। सोसाइटी रे विभिन्न एक्टिविटीज होची दैट इज फंक्शन। So I want to tell you what structural functionalism is all about. Structural functionalism is an approach by which it is thought that all elements of society are working in such a manner that orderliness or stability is maintained in society.
every element is having positive contribution for society जे स्ट्रक्चरल फंक्शनालिज्म टा कहे सोसाइटी गोटे स्ट्रक्चर अच्छी सोसाइटी भितर बहुत एलिमेंट अच्छा प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी फॉर एग्जांपल जदि आम सोसाइटी कथा कहबा सोसाइटी एलिमेंट गोटे एलिमेंट है पॉलिटिकल सिस्टम आउ गोटे है रिलीजियस सिस्टम आउ गोटे है एजुकेशनल सिस्टम एमाने समस्ते पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आनी रखी and all elements of society are contributing towards the stability or orderliness of the society. एटा होची structural functional approach. Generally structural functional approach टा गोटे conservative approach काहे कि structural functional approach कहे society रे जहा चलीची भलो चलीची तेन जेहेतु सबो माने रिलीजन रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि इकोनॉमी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि जुडिशियरी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि ब्यूरोक्रेसी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी जदि प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी ताहले कोनोसी एलिमेंट को चेंज करिया दरकार नहीं चेंज दरकार नहीं माने सोसाइटी स्टेबिलिटी अच्छी ए कथा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहे तेनो स्टार्टिंग फ्रॉम दरखेम टिल टालकट पार्सन्स everybody contributed for the growth and development of structural functionalism and they started promoting the idea that every element of society has a positive contribution. That's the reason big scale change, large scale change is not necessary in society. तेणु ये हिसाब रे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोसाइटी की नहीं कि गोटे कंजर्वेटिव अप्रोच आनिला आर के मर्टन किंतु से कंजर्वेटिव अप्रोच को केमिति चेंज कले सेटा म कहूची देख आर के मर्टन कौन कले आर के मर्टन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे मॉडिफिकेशन आनिबा पूर्वरु फास्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे जो तीनटा इंपोर्टेंट लॉ बा तीनटा इंपोर्टेंट पोस्टुलेट बा तीनटा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स थिला ताकू स्टडी कले जे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे तीनटा इंपोर्टेंट पोस्टुलेट अच्छी से तीनटा पोस्टुलेट को ये रिजेक्ट करदेले आर के मर्टन केमिति कल तीनटा पोस्टुलेट आगे कौन तमे जानो फर्स्ट होची पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी सेकंड होची पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म थर्ड टा होची पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी ए तीनटा पोस्टुलेट आगुरु थिला एकु सब कंट्रीब्यूट किए करिथिले ना सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने तांकर एनालिसिस माध्यम रे एई तीनटा पोस्टुलेट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे डेवलप करिथिले आर के मर्टन एई तीनटा पोस्टुलेट को रिजेक्ट कले एई तीनटा पोस्टुलेट को रिजेक्ट करिबा पाई आर के मर्टन केते गुडा कांसेप्ट को यूज कले कौन सब कांसेप्ट से यूज कले आर के मर्टन फर्स्ट पोस्टुलेट को आगे आसो दिस पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ए पोस्टुलेट को किए देइथिले ना ए आर रैडक्लिफ ब्राउन बोली कि जने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए आर रैडक्लिफ ब्राउन बोली कि जने एंथ्रोपोलॉजिस्ट एटा को से डेवलप करथिले सेकंड होची पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एटा को बी के मालिनोव्स्की करथिले बी के मालिनोव्स्की डेवलप करते आस फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी की जीवा कौन पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी एटा को ए आर रैडक्लिफ ब्राउन डेवलप करथिले कौन पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी सेटा कहूची द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी promotes the idea that all elements of society are working in such a manner that unity or integration is brought in the whole society. Author repeat course. The postulate of functional unity given by A. R. Radcliffe Brown promotes the idea that all elements of society are working
in such a manner that unity or integration is brought in the whole society. एटा को ओडिया रे कहि दउची A.R. Radcliffe Brown postulate of functional unity की डेवलप करथिले. A.R. Radcliffe Brown कहउचंती सोसाइटी रे थिबा प्रत्येक पार्ट सोसाइटी रे थिबा प्रत्येक एलिमेंट एमिति भाबरे काम करूचंती जे इंटर सोसाइटी रे यूनिटी और इंटीग्रेशन आसुची. अर्थात सोसाइटी भितरे जुडिशियरी अछि. जुडिशियरी कोन करूची कॉन्फ्लिक्ट टाकू सॉल्व कर दउची लोकंग भितरे. सोसाइटी भितरे एजुकेशन अछि. एजुकेशन कहूची जोटा भल काम कर जोटा खराब काम ताकू करनी. सोसाइटी भितरे रिलीजन अछि. रिलीजन कहूची हला कोन जोटा पुण्य काम सेटा को कर जोटा पाप काम कर नाही. सोसाइटी भितरे ब्यूरोक्रेसी अछि. ब्यूरोक्रेसी लोक मान को हेल्प करूची तांको प्रॉब्लम को सॉल्व करूची. तेणु सोसाइटी भितरे थिबा विभिन्न एलिमेंट माने एमिति भाबरे काम करूचंती जे फाइनली सोसाइटी रे इंटीग्रेशन आसुची. एटा हला पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी रो सारांश. एटा को डेवलप करथिले A.R. Radcliffe Brown जोटा को मु इंग्लिश रे कहिली all elements of society are working in such a manner that unity or integration is brought in the whole society or whole system. पिला माने सिस्टम कहिले कोन स्ट्रक्चर संगरे फंक्शन को मिसेई दबो दैट इज कॉल्ड सिस्टम. सोसाइटी इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम कारण सोसाइटी स्ट्रक्चर अछि. सोसाइटी स्ट्रक्चर कहले ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी भितर फंक्शन विभिन्न काम लोक माने करूचंती. सो सिस्टम इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन. पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी A.R. Radcliffe Brown को द्वारा दिया हैथला जोटा कहूची all elements of society are working in such a manner that unity or integration is brought in the whole system. एई कथा आगुरु कुहा जाइथला. बर्तन R.K. Merton कोन कले. R.K. Merton कहउचंती एट तीनटा कांसेप्ट को यूज करचंती फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन. फंक्शन माने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डिसफंक्शन माने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नॉन फंक्शन माने नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन. तेणु यही तीनटा कांसेप्ट को यूज करके R.K. Merton आपको मॉडिफाई कले. केमिति मॉडिफाई कले आ मॉडिफाइड व्यू कोन हैला लेख सेटा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर not having only positive contribution, they have also negative contribution, they have also non-functional consequences. All elements are not having only positive contribution, they have negative contribution, they have also non-functional consequences. Modification होची ना नहीं. तापर से कहउचंती modified view कोन दउचंती all elements of society are working in such a manner that the net balance of their consequences for society is positive. देखो प्रथम पोस्टुलेट टा केमिति थिला मॉडिफिकेशन केमिति थिला. पोस्टुलेट टा थिला एमिति all elements of society are working in such a manner that unity or integration is brought among in the society. एटा थिला ओरिजिनली ताकू मॉडिफाई कला परे R.K. Merton तीनटा कांसेप्ट माध्यम रे फंक्शन डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन माध्यम रे मॉडिफाइड स्टेटमेंट हला all elements of society are working in such a manner that their net balance of consequences for society is positive. अर्थात सोसाइटी रे बहुत एलिमेंट अछि रिलीजन अछि आगुरु समस्ते कहउथले फंक्शनलिस्ट माने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट माने कहउथले रिलीजन न पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि. R.K. Merton से कथा कहले से कहले रिलीजन न पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अछि नॉन फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस अछि. फॉर केमिति देखो हाई कास्ट हिंदू लगी ट्रेडिशनल कास्ट सोसाइटी जे तल थिला रिलीजन टा हाई कास्ट हिंदू को प्रिविलेज्ड करथिला. यूरोप रे व्हाइट लोक को रिलीजन रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थिला किंतु यूरोप रे ब्लैक प्रति रिलीजन रो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थिला कारण रिलीजन लगी ब्लैक रो पोजीशन तळे व्हाइट रो पोजीशन ऊपर थिला. इंडिया रे रिलीजन लगी ब्राह्मण रो पोजीशन ऊपर दलित रो पोजीशन तळे थिला. आ जे धर्म रे विश्वास न कला
ता लगे रिलीजन रो पॉजिटिव कि नेगेटिव किछि कंट्रीब्यूशन नथिला से तो विश्वास करनी मूल आ कोन अछि तेनो मॉडिफाइड स्टेटमेंट हला रिलीजन रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एवं नॉन फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस अछि किंतु जदि पॉजिटिव नेगेटिव नॉन रो तो किछि मूल्य नाही पॉजिटिव नेगेटिव दीटा कंट्रीब्यूशन जदि आमे रिलीजन न मिसई दबा आमे देखिबा नेट बैलेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीजन फॉर सोसाइटी इज पॉजिटिव रिलीजन ना रे शोषण लुंठन अत्याचार ये सब जिनस होउची किंतु रिलीजन माध्यम रे सोसाइटी रे एथिक्स मोरालिटी भी बंचिची तेनु रिलीजन रो बेसी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नाही कम नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अछि बेसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि तेनु पॉजिटिव अधिका नेगेटिव कम दीटा को मिसई देले नेट बैलेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजन इज पॉजिटिव बुझे होची एई बाटे आर के मर्टन फास्ट पोस्टुलेट को मॉडिफाई करिया पई तीनटा कांसेप्ट फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन के यूज कले एंड फाइनली आर के मर्टन गेव द मॉडिफिकेशन ऑफ द फास्ट पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी where he categorically mentioned the fact that all elements of society are working in such a manner that their net balance of consequences for society is positive. बुझिएला पिला माने so first postulate and its modification is already done by R.K. Merton. तापरे आस second postulate कौन the postulate of universal functionalism. The second postulate हला the postulate of universal functionalism. आर के मर्टन का पूर्वरु अर्थात दरखेम का पाखरु आरंभ करिकी टालकट पार्सन्स का पर्यंत सोशियोलॉजिस्ट एवं एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जहा कहिथिले सेटा कंट्रीब्यूट करूची द पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म जोटा को फॉर्मली डेवलप करथिले बीके मालिनस्की बोलिकी जने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रिटेन रो बीके मालिनस्की जने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रिटेन रे थिले सी कौन कहले सी कहले लेख पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म बा फंक्शनल यूनिवर्सलिटी बीके मालिनस्की कहउचंती every element of society is having a positive contribution. Every element of society is having a positive contribution. सोसाइटी रे थिबा प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि अर्थात रिलीजन रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्यूरोक्रेसी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जुडिशियरी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एजुकेशन रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अछि एक कथा बीके मालिनस्की कहिथिले जोटा कंट्रीब्यूट करिथिला पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म के डेवलप करिया पाए आर के मर्टन एठी कौन कले से तीनोटी कॉन्सेप्ट फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन की यूज कले आर के मर्टन यूज 3 कॉन्सेप्ट फंक्शन डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन एंड मॉडिफाइड द सेकेंड पोस्टुलेट आफ्टर मॉडिफिकेशन आर के मर्टन इज ऑफ द ओपिनियन दैट all elements of society are having not only positive contribution but also negative contribution, that is dysfunction, and also neither positive nor negative consequences, that is non-functional consequences. Second postulate modify हो गला पिला माने फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकेंड पोस्टुलेट भितर तफात कौन तफात अच्छी बहुत बड़ तफात अच्छी फर्स्ट पोस्टुलेट कौन करे एवरी एलिमेंट को सोसाइटी संगे जोड़िया प्रयास करुची फर्स्ट पोस्टुलेट ट्राइज टू डिस्प्ले यू द कनेक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड द सोसाइटी बट सेकेंड पोस्टुलेट सिंपली प्रमोट्स द आइडिया रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी एलिमेंट कारण फर्स्ट पोस्टुलेट को कम बैक every element of society are working in such a manner that unity or integration is brought in the whole system तान एलिमेंट को सिस्टम सोसाइटी संगे जोड़ुची फर्स्ट पोस्टुलेट किंतु सेकेंड पोस्टुलेट कहूची एवरी एलिमेंट ऑफ सोसाइटी हैज ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बीके मालिनस्की कथा कहिथिले आकु आर के मर्टन तीनोटी कांसेप्ट यूज कले फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन
से कहले एवरी एलिमेंट हैज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर वन ग्रुप दैट इज फंक्शन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड ग्रुप दैट इज डिसफंक्शन, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फॉर थर्ड ग्रुप दैट इज नॉन फंक्शन। बुझी होची तेनु केमिति मो जो एग्जांपल दौथे वर्षा हला जी चाष करुच्ची वर्षा को अपेक्षा करथला ता लगी वर्षार पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वर्षा हला तमे पिकनिक पार्टी जाइथलो तम लगी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वर्षार आसिला। जी घरे बसीची एयर कंडीशन चैम्बर रे वर्षार नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ता लगी अछि, तार चाष संगे से कनेक्टेड नहीं, ता लगी नॉन फंक्शनल consequences आसला। In this way, R.K. Merton modified also the second postulate. Right now, come to the third postulate. Third postulate is the postulate of functional indispensability. ये postulate को develop करिथिले B.K. Malinowski को develop करिथिले and it was supported by Talcott Parsons. It was supported by Talcott Parsons. देखी दौची तुमर किसी डाउट अच्छी कि नहीं तापर आगेवा किसी प्रश्न पचारि कि देखी दौची। अच्छा किशोर बराद, विद्यानाथ हरिजन, फंक्शन डिसफंक्शन नॉन फंक्शन, वैद्यनाथ हरिजन मैनिफेस्ट फंक्शन, सुदीप्ता सामंतराय। सर नमस्कार, मु आपणकर ओल्ड स्टूडेंट। एथर ओएस मेन रे आपणक नोट रु डायरेक्ट क्वेश्चन आसीथिला। हाँ आसला सुदीप्ता, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आसला। थैंक यू सब डायरेक्ट क्वेश्चन मु जहाँ पढ़ेबी डायरेक्ट क्वेश्चन सोशियोलॉजी एथिक्स इंग्लिश शेष पाइब डायरेक्ट क्वेश्चन सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग सोशल इश्यूज। थैंक यू सो मच सुदीप्ता। अच्छा बर्तमान आस नेक्स्ट होची functional indispensability. This was developed by B.K. Malinowski and supported by Talcott Parsons. कौन functional indispensability? पिला माने indispensable लो ओडिया अर्थ होची अपरिहार्य जहाँ को छाड़ी की केही रही परिबे नाही, that is indispensable. B.K. Malinowski कहउचंती religion is indispensable for society. Magical practice was indispensable for primitive people. माने प्राचीन काल रे मैजिकल प्रैक्टिस बिना सोसाइटी बंचिबा संभव नथिला। आजिका दिन रे धर्म बिना समाज बंची पारिबनी। एटा होची इंडिस्पेंसिबिलिटी। टालकट पार्सन्स भी सही कथा कहिचंदी। पिला माने मु टालकट पार्सन्स कर एजीआईएल मॉडल पढ़ेछि। टालकट पार्सन्स कर एजीआईएल मॉडल पढ़ेछि। टालकट पार्सन्स कहउचंती सोसाइटी रे चारिटा इंपोर्टेंट एलिमेंट अछंती जहा बिना सोसाइटी बंची पारिबो नाही। These four elements are having positive contribution for society. Without these four elements, the society cannot survive. They are called functionally indispensable element. A means adaptation, G means goal attainment, I means integration, L means latency. तार एग्जांपल सब पर्सन कौन देइछंती? अडाप्टेशन नो एग्जांपल हला इकोनॉमी। आमे इकोनॉमी रो फूड क्लॉथ शेल्टर पाउछंती। बिना इकोनॉमी रे सोसाइटी बंची परिबनी। जी हला गोल अटेनमेंट। पर्सन जी रो एग्जांपल देइछंती पॉलिटिकल सिस्टम। कारण गवर्नमेंट तमरो फिक्स करूची तम इकोनॉमिक ग्रोथ केते परसेंट हबो, तम पॉपुलेशन केमिति स्टेबल हबो, तमरो पोल्यूटेड रिवर केमिति पोल्यूशन फ्री हबो। तेणु जी एटा हला गोल अटेनमेंट से कम पॉलिटिकल सिस्टम करछि। आई हला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन रो एग्जांपल पर्सन कहउचंती किए ना जुडिशियरी। जुडिशियरी कोन करछि? लोकंक भितरे कॉन्फ्लिक्ट को दूर होछि, फल रे सोसाइटी इंटीग्रेशन रहउछि।
एल रो एग्जांपल एल फुल फॉर्म है लैटेंसी लैटेंसी रो टू फोल्ड फंक्शन अच्छी गोटे होची पैटर्न गोटे होची टेंशन मैनेजमेंट सेकेंड फंक्शन होची पैटर्न मेंटेनेंस लैटेंसी रो एग्जांपल प्रोफेसर पार्सन देइचंती रिलीजन से कहउचंती रिलीजन लोकंक मन भीतर को स्टेबिलिटी आणुचे तांको मन भीतर थिबा टेंशन को दूरे दोची रिलीजन जदि कोनोसी जगह रे अन्यायर शिकार होचंती लोक माने रिलीजन कोन करूची ताको जस्टिफाई करूची जे पूर्व जन्म रे बोध हुए मु खराब काम करी जहाँ फल ये जन्म रे भल काम करी मु सक्सेसफुल हेली नाही ए कथा कहले मन रे शांति आसुची तेणु यही चारिटा एलिमेंट को प्रोफेसर पार्सन कहउचंती फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट ओके अच्छा बीके मालिनस्की तंकर मैजिक की कहले ट्रेडिशनल सोसाइटी रे इंडिस्पेंसिबल रिलीजन को मॉडर्न सोसाइटी रे कहले इंडिस्पेंसिबल एक कथा से कहउचंती अच्छा तेणु कौन पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी टिके बुझिया पे चेष्टा कर पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय B.K. Malinowski and supported by Professor Talcott Parsons. The postulate of functional indispensability promotes the idea that there are certain elements without which the society cannot survive. These elements are having positive contribution for society and these are called functionally indispensable element. For Talcott Parsons that is AGIL model. एक कथा कुहा हिथला आर के मर्टन ताकू केमिति मॉडिफाई कले एई कॉन्टेक्स्ट रे मॉडिफाई करिया पे थर्ड पोस्टुलेट को आर के मर्टन किछि कांसेप्ट यूज कले गोटे कांसेप्ट रो ना हला फंक्शनल अल्टरनेटिव गोटे कॉन्सेप्ट रो ना हला फंक्शनल अल्टरनेटिव और फंक्शनल इक्विवेलेंट एफ मीन्स फंक्शनल स्पेस नहीं बोली कि एफ लिखिदेली इक्विवेलेंट और एफ मीन्स फंक्शनल सब्स्टिट्यूट थर्ड पोस्टुलेट को मॉडिफाई करिवा पाई आर के मर्टन एई तीनिटा कांसेप्ट यूज करूचंती गोटेर ना होची फंक्शनल अल्टरनेटिव और आउ गोटेर ना हला फंक्शनल इक्विवेलेंट आउ गोटेर ना हला फंक्शनल सब्स्टिट्यूट ये तीनिटा एक्चुअली सिनोनिम फंक्शनल अल्टरनेटिव फंक्शनल इक्विवेलेंट और फंक्शनल सब्स्टिट्यूट ये कॉन्टेक्स्ट रे आर के मर्टन कौन कहउचंती से कहउचंती इन सोसाइटी नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल इन सोसाइटी नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल for every element there is availability of its alternative element or its equivalent element or its substitute element लिखि दियो आर के मर्टन modified the third postulate that is the postulate of functional indispensability by using concepts like functional alternative or functional equivalent or functional substitute. Full stop. R. K. Merton is of the opinion that nothing is indispensable for society. Nothing is indispensable for society. Rather, every element has its alternative or equivalent element or substitute element. प्रत्येक एलिमेंट रो सब्स्टिट्यूट एलिमेंट अछि ए कथा आर के मर्टन कहउचंती केमिति देख पिला माने गोटे पिलाटी को जन्म देला बेले 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 गोटे गोटे जगह माँ मरी जाउछि तेनो माँ मरीगला परे पिला भी बंचुचंती केते गुडे जगह तेनो माँ भी इंडिस्पेंसिबल पिला लगी नुहे मदर इज नॉट इंडिस्पेंसिबल बिकॉज मदर हैज सब्स्टिट्यूट आल्सो जदि माँटा पिला लगी अपरिहार्य हला नाही इंडिस्पेंसिबल हला नाही
ताहले आउ सोसाइटी रे किए इंडिस्पेंसिबल हबो आर के मर्टन कहउछन केही इंडिस्पेंसिबल नहंती सबु एलिमेंट रो अल्टरनेटिव बा सब्स्टिट्यूट एलिमेंट अछि केमिति देखो टालकट पार्सन्स कहिथिले कोर्ट कचेरी माध्यम रे नो डाउट टालकट पार्सन्स कहउछंती court of law is capable of solving the legal dispute but sometimes things so happen that even court cannot dispense justice properly कारण कोर्ट कचेरी रे कोन होची न्याय दबा प्रक्रिया रे सबठो बड़ जिंसटा होची एविडेंस बेसिस रे हमें न्याय पाउछंती धर गोटे लोक मर्डर केस रे एक्यूजेशन हेची ता विरुद्ध रे एक्यूज हेची से कोन हला फॉल्स सब एविडेंस आसी गला से प्रकृत रे काहा को मारिनी किंतु दोषी साब्यस्त हे कि जेल पळेला बेले बेले निरीह लोक भी जेल दंड पाउछन ना नाही तनो सेही जगह रे आर के टालकट पर्सन्स कहउछंती जेते बेले गोटे लोक दोष न करी कि दंड पाउची मन भितरे कष्ट आसीबो अशांति आसीबो रेबेलियस थॉट आसीबो ता मनरु से अशांति से कष्टटा केमिति दूर हबो पर्सन कहउछंती से जदि धर्म रे विश्वास करूची ता मनरु से कष्टटा दूर हबो से भाबिबो सेना कोर्ट रे मते न्याय मिलिलानी काहे कि मिलिलानी बोधे पूर्व जन्म रे मु किछि खराब काम करिथिली जदि हिंदूटी से हेथिबो प्रारब्ध रे विश्वास करिवो से को पूर्व जन्म रे मु किछि खराब काम करिथिली जहा फल रे ए जन्म रे मु दोष न करिक भी दंड पाइली जेल रे अछि जदि एई कथा से चिंता कला पूर्व जन्म रे मु पाप करथिया लागि ए जन्म रे बिना दोष रे दंड पाउची तार रेबेलियस माइंड टा टिके शांत होई जिवो तेनो एटा होची लैटेंसी फंक्शन शांत होई गेले सोसाइटी टा स्टेबल हेकी रहिवो तेनो आर के मर्टन कहउचंती sometimes the court of law may not टालकट पर्सन्स कहउचंती sometimes the court of law may not give justice to the people but if they believe in God and religion their staunch or strong belief in religion and God would help them in matter of removing their tension and providing them mental stability and peace बुझे होची तेनो religion is indispensable for modern society एक कथा टालकट पर्सन्स कहिले आर के मर्टन ताकू रिजेक्ट करूचंती से कहउचंती रिलीजन टा मेंटल पीस दउची रिलीजन टा मनुष्य को होपफुलनेस आणुची ता भितरे होपलेस करू नाही होपफुलनेस आणुची आर के मर्टन कहउचंती कम्युनिस्ट सोसाइटी रे तो रिलीजन नाही ताहले लोक माने मोटिवेशन कम्युनिस्ट सोसाइटी रे केमिति पाउचंती मर्टन का भाषा रे रिलीजन रो जहा भूमिका मोटिवेशन आनिया पाई धर्म रे विश्वास करथिया लोकन का भितरे सेम भूमिका होची कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रो मोटिवेशन आनिया पाई जो लोकटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रे विश्वास करूची से भविष्य को नहीं के स्वप्न देखुची आगु को गोटे इक्वाल सोसाइटी आसीबो जोठी केही गरीब केही धनी रहिबेनी ये जो होपफुलनेस ता ता भितर को की आणुची कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आणुची जेमिति बिना दोषरे दंड पाइथिया लोकटे धर्म रे विश्वास करिकि कहूची मु पूर्व जन्म रे पाप करिथिली सेइथ पई बिना दोषरे ए जन्म रे दंड पाइली किंतु आगु को मोर भलो जन्म हबो ए जन्म रे जो बिना दोषरे दंड पाइची सेथि पई मु कोन हबो फ्यूचर रे मु नेक्स्ट बर्थ रे मु भलो परिवार रे जन्म हेबी भलो क्लास रे जन्म हेबी सेमिति रिलीजन जो मोटिवेशन रिलीजियस बिलीवर को दउची सेम मोटिवेशन कम्युनिस्ट लोक को तार आइडियोलॉजी दउची सो रिलीजन हैज ए सब्स्टिट्यूट दैट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बुझियला टालकट पर्सन्स कहउचंती डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी जे जो सोसाइटी मॉडर्न सेटी निहाती गणतंत्र रहिबा दरकार without democracy no society will be regarded as a modern society so for modernity democracy is indispensable एक कथा पार्सन कहउचंती आर के मर्टन फंक्शनल इक्विवेलेंट बा फंक्शनल सब्स्टिट्यूट बा फंक्शनल अल्टरनेटिव कांसेप्ट यूज करके कहउचंती डेमोक्रेसी रो जहा रोल सेही रोल भी गोटे बेनिवोलेंट मोनार्क दे परिबो बेनिवोलेंट कहले विनम्र विनयी हला विनम्र विनयी एवं जने कोन
बेनिवोलेंट माने दया मनोभाव जो राजार अच्छी देख डेमोक्रेसी समस्त राइट टू फ्रीडम दौची फ्रीडम देची राइट टू स्पीच देची राइट टू मुवमेंट देची सब जिनस करची तेणु गणतंत्र सब्स्टिट्यूट किए हो पार गोटे बेनिवोलेंट मोनार्क हो पार दया दया बा विनयी राजाटे गणतंत्र सब्स्टिट्यूट हो पार ना नाई सो डेमोक्रेसी इज नॉट इंडिस्पेंसिबल एक कथा आर के मर्टन कहते रादर द सब्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इज बेनिवोलेंट मोनार्क रिलीजन इज नॉट इंडिस्पेंसिबल आर के मर्टन कहते किंतु पार्सन कहले रिलीजन इज इंडिस्पेंसिबल मर्टन कहते रिलीजन इज नॉट इंडिस्पेंसिबल द सब्स्टिट्यूट ऑफ रिलीजन इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये कथा कहीकि वर्तमान आर के मर्टन कौन कले फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थर्ड पोस्टुलेट दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी ताकू मॉडिफाई करदेले ए हिसाब रे ये जो तीनटा पोस्टुलेट रो मॉडिफिकेशन हो गला परे तमे बुझी पारुछ आर के मर्टन वर्तमान स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की वैल्यू फ्री करदेले नाउ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बिकेम वैल्यू फ्री अप्रोच कारण प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी एवं नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अच्छी दीटा कथा चिंता कले वैल्यू फ्री हो गला आगुरी कौन वैल्यू लोडेड अप्रोच थिला प्रत्येक एलिमेंट रो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कथा सोशियोलॉजिस्ट माने कहिथिले इन दिस वे आर के मर्टन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक फंक्शन dysfunction non-function functional alternative functional equivalent and functional substitute modified the traditional postulate of functionalism and traditionally it was regarded as a value loaded approach giving emphasis upon stability but R. K. Merton's modification made structural functionalism free from value and it made structural functionalism a neutral approach ये कथा करिकी बर्तमान से मॉडिफाई करी देले मु भाबुची तुम समस्ते बुझी पारथियो क्लियरली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म प्रति आर के मर्टन कर सबठु बड़ कंट्रीब्यूशन हला एटा ता संगरे आर के मर्टन आउरी बहुत गुडे कांसेप्ट यूज करचंती सेटा मु सबु तो कहि पारुनी आजिर क्लास रे आउ गोटे कथा डिस्कशन करिकी मु वाइंड अप करिवि आर के मर्टन कर आउ गोटे कांसेप्ट हला सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ए कांसेप्टटा मु बुझे दोची सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कौन से प्रोफेसी पिला माने बेले बेले आमे गोटे अजम्पशन डेभलप करंती जो अजम्पशन टा ठीक न थाई पारे भूल थाई पारे किंतु सही अजम्पशन ने आमे विश्वास करिकी देखंती सब ठीक हो जाए केमिति मु कहूची फॉर एग्जांपल गोटे पिलाटे एवरेज पिला अच्छी एग्जांपल दोची सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी गोटे पिलाटे एवरेज स्टूडेंट अच्छी सी तार आंसर लेखिकी मते देखैला मु ता आंसर देखिकी मु चिंता कली ए पिलाटा केमिति आईएएस पाइबो केमिति ओएस पाइबो तार आंसरटा भारी एवरेज थिला मु कहली ओ योर आंसर इज आउटस्टैंडिंग द टाइप ऑफ आंसर यू आर राइटिंग डेफिनेटली वुड बिकम सक्सेसफुल इन आईएएस एग्जाम इन ओएस एग्जाम मोर ऑब्जेक्टिव हला पिलाटा को केमिति सक्सेसफुल करेबी तार आंसरटा थिला एवरेज मु कहि देले आउटस्टैंडिंग ता भितर मोटिवेशन बढ़ी गला बर्तमान सी गोटे परे गोटे आंसर लिखिला जेते आंसर लिखियो सेते पढ़िया पई पढ़ियो पढ़िला परे फाइनली परीक्षा देला परीक्षा रे सक्सेसफुल हला परे मु जो कही यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट योर आंसर अप्रोच ऑफ राइटिंग आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटा प्रूव है ना नहीं मु एज्यूम कर देइथली जे आपको सक्सेसफुल करेबी किंतु प्रकृत से आउटस्टैंडिंग नथिला एवरेज स्टूडेंट थिला किंतु मु फ्यूचर कथा को टार्गेट करिकी ताकू कहली जे तोर आंसर राइटिंग स्किल हला आउटस्टैंडिंग डेफिनेटली तू सक्सेसफुल हबु किंतु जेतेबेले कहितली सेतेबेले ए कथाटा भूल थिला परे सेटा ठीक हला दैट इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ गोटे एग्जांपल मु दउछि आर के मर्टन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी रो एग्जांपल देइचंती बैंकिंग फेल्युअर गोटे बैंक भले चलछि
गोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक भल चलती मु चाहिए से बैंकटा मु जड़े इकोनॉमिस्ट मु चाहिए से बैंक केमती भल चलनी मु सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी करी मु प्रथमे कहि ये बैंक रो परफॉर्मेंस आदौ भल नाही ये बैंक इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी ये कथा आगे गोटे एजम्पशन क्रिएट कली से बैंक को लेकिन कहला परे सेटा को स्प्रेड करैली स्प्रेड करैला परे किछि लोक मो कथा शुणिकी से विश्वास कले कारण मु गोटे इकोनॉमिस्ट से माने पैसा सेठू बैंक रे जो रखी थे पैसा को कहला रे बैंक रे अनसर्टेनिटी चलती पैसा रखिबाटा ठीक नुहे पैसाटा को से माने उठे आनला परे से मेसेज चारियाड को स्प्रेड हो गला आउरी जो लोक माने पैसा रखी थे से पैसा को से माने उठे आनला परे फाइनली से बैंक रो डिपोजिट कमिला बैंक फेलुअर हैला दैट इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बुझी होची ना नहीं सेल्फ से कथा मु जो एग्जांपल देली सेटा को मु लिखिची देखो इट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कथा लिखिची A self-fulfilling prophecy is a sociological concept introduced by Professor R.K. Merton, which refers to a belief or expectation. एटा गोटे belief or expectation, whether positive or negative, दीटा बाटे ही पारे, about a situation or a person influences the behavior in such a way that makes the initial belief come true. बुझे होची? A self-fulfilling prophecy is a prediction or expectation that causes individual to act in ways that make the prediction come true, even if it was originally untrue. जेने पिलाटा एवरेज स्टूडेंट थिला मु ओरिजिनली ताकू कहिदेली तू आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ता भितर मोटिवेशन आसला बहुत आंसर लिखिला बहुत पाठ पढ़िला सक्सेसफुल हैला सेटा होची सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मोर इंटेंशन अनुଯାयी I am making the things happen as per my intention. That is called self-fulfilling prophecy. How it works? ये गोटे cyclical fashion रे act करे. A false definition of the situation is made. This false belief influences the behavior of other. This behavior causes the belief to come true. The original false assumption thus confirmed by the outcome it helped create. It is example देसी classic example is banking crisis. Merton gave the example. People believe a bank is failing even if it is financially sound. Everyone rushes to withdraw their money. The bank, unable to meet the sudden demand, actually collapses. जे सब लोक विश्वास करदेले जे पैसाटा बैंक रे अनसर्टन हो गला दौड़ी के जीवे पैसा उठाइया पाई एते लोकंग पैसा बैंक कोठु आनियो तेणु क्राइसिस आरंभ होगा बैंक रे लोकों पैसा फेरवा ए फॉल्स बिलीफ इज अनस्टेबल ए फॉल्स बिलीफ दैट बैंक इज अनस्टेबल बिकम्स ट्रू बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव बिलीफ है एमती सब एग्जांपल मुझे आज तो क्लास सारिया बाइंड अफ करने टाइम हो जाइए तेणु आउ आगेवा संभव नुहे लेट मी वाइंड अफ द क्लास फॉर टुडे. Thank you all for attending today's YouTube live class organized on behalf of StudyIQ. Thank you once again.